Oh, we are live. Yes, we are live. I guess start हो गया है. Just checking it. Yes, we are live. We are live. सब कुछ दिख रहा है. Awesome, Okay. nice. Good start to Awesome. you. Yes. Good start to half of the year. Yeah. So, uh, मैंने actually live stream start किया था Jan में, and now I paused in between and अब आधा साल खत्म होने के बाद फिर से start कर रहा हूँ. Nice. Oh, nice, So, nice. हाँ, लाइव स्ट्रीम तो अच्छा है. Every month, every week जो आया है, we can always discuss. yes. So Mm, let's start with the question that we have chosen for today, which is what happens if Satoshi sells one Bitcoin? So, what do you think? What will happen? mm, Like, okay. f- first thing, how much time will we take to actually have this news spread to everyone? Like, Hmm, how much time? interesting. What do you think? I think we will know immediately because Huh. Satoshi's wallet is public and there's a lot of trackers on it. Like anyone with a sizable amount in Bitcoin will care about that. So either they will track it or they will be in touch with someone who tracks it actively. Hmm. So there will all, of course, be a cascading effect. So the whales will know it fast. They will react. When they react, prices will move. Then people will think about what happened because of which price is moving. Then they will go on CT. On CT, Hmm. they will find that this happened. And then people who are not on CT, they will come to know about it through their CT friends. But I think all of Huh. this will happen uh, in a global wave. जैसे whoever is sleeping, when they wake up in one within 1 hour, they will know. Just like how Trump coin launch Huh. happened, right? So Huh. it was a global So, wave of yeah. people waking up. Hmm. So similar, I think, for Bitcoin, and especially because Satoshi wallet, at least the wallet officially tagged to Satoshi, has 1 million in Bitcoin, which is like 5% of supply. That's a Huh. lot. So, okay. But he's not selling 1 million, right? But again, like when we like right now, when we do the calculation of total Bitcoin, we arrive Hmm. at a number somewhere between 19.5 to 20.5 because we account for all the bitcoins which have been lost, all the bitcoins which are still to be emitted, and Satoshi's wallet. Hmm. So, for Okay. the financial modeling, a lot of things will have to be changed because the number of Bitcoin in circulation, the definition of that will, sorry, the baseline for that is going to change Huh. as soon as even if he So, sells one Bitcoin. so what will be the exact first domino that will be pushed? Like, do you think Uh, Michael Saylor will sell as soon as Satoshi sells one Bitcoin? See, like, so it because this is definitely something which is negative. So Huh. it is 100% sure that when this news leaks, Bitcoin price will go down, not up. And if it is 100% sure that it will go down, then I expect people to open shorts, right? Even if you are bullish Huh. on Bitcoin for the short term, you will open your shorts. You will either sell Bitcoin or you will Huh. just plainly open shorts, short positions. Hmm. Interesting. But, like, okay, so over here, on a contrary, what if Satoshi buys one Bitcoin? In that case, also, wallet is active now. So, is Same that a effect. positive news? Same I, effect. I think same effect because it's not about the Hmm. dollar amount or buying or selling. It's about breaking off the silence of a digital god. Okay. So, what could be a preventive measure that the Bitcoin community can take from this point? Like, because this is a problem, right? किसी के पास 5% supply है, that is Uh, locked, and we are assuming that it will always be locked because the lost bitcoins are lost. Okay, so that we can stop thinking about, but this is something that can go active at any point because we don't know who Satoshi is. Is he alive? huh? And
if he's a he, if it's a group, we don't know anything, right? So, Yeah. uh, have we taken this in account, or we are just building the whole uh, financial system on the assumption that Satoshi is not going to touch the wallet again? I think it's the latter. We are building the whole financial system on the assumption that Satoshi will not touch the wallet again. And the assumption is driven by the fact that that wallet, which has 1 million Bitcoin, is now valued at what, $100 billion? Uh, Hmm. so Yes. if Satoshi is not breaking for $100 billion, then we will assume that he will not break. And like most of us, we have assumed that Satoshi is also dead. There are a lot of names which people think about when talking about Satoshi, but again, like I don't think we have fully factored this in. It is Hmm. just driven by the assumption that there is no Satoshi uh, left to operate his wallet. But even if it does, not sure that it will go to Bitcoin will go to zero. It might Okay. dip and then recover, but it will be very dirty. So, like, think of the doomsday that Bitcoin starts spiraling down. So, uh, how do we kind of will it first thing will it affect the entire crypto economy? Like, if you look at ETH, you Mhm. look at Sol, you look at all other chains, the whole uh, new financial system that we have kind of created. Not only financial, we have created a governance system as well around it. We have created a whole cultural economy as well around it. Does it affect that, or these are operating in silo to each other? I think it should definitely affect because, um, like for most people, digital assets are digital assets, right? And Hmm. as we have seen in all the cycles, so when Bitcoin pumps, then there is the altcoin pump, and then there is the meme coin pump. So it's a wave, but Hmm. so there is one, two, three, but it happens in a sequential way. So whenever something happens to Bitcoin, it also cascades down to other assets. So if Bitcoin faces a problem, Ethereum will face a trust problem, Solana will face a trust problem, and Fartcoin will also face a trust problem because in the end they are all digital assets. Altcoin already has a trust problem, but we'll talk about it. So, okay, uh, if I want to today start factoring in this doomsday scenario, Mhm. how can I do that? First thing, and how can the Bitcoin community do that, and probably how I can lead this whole initiative for Bitcoin community, something of that sorts. If we would have to plan Mm, this today. Um, so one thing is definitely where you could plan your response, like you just said, like how do you plan this? So opening a short position is something which is definitely um, on the books for everyone. But apart from that, you might also need some stop losses to trigger when the prices fall down so that you can exit those positions and maybe re-enter at a time when you feel that the crisis has passed away. So there needs to be some stop losses which need to be calculated depending on the portion of Bitcoin in Satoshi's wallet and the liquidity in the current Bitcoin market. So all of those can be modeled in where we get some stop loss prices, but it will be very dynamic. So because every day the liquidity in the market changes, there are new emissions happening. But yeah, like in the end, because it's again like a game theory problem. When it happens, some people will lose money and some people will make money. So what will we are talking about is like how are we on the side which makes money? But I don't think we can create a scenario where everyone makes money. Some people will definitely lose, and it's Most just how people will fast our lose. response is. Yeah, most people will lose, and Uh, the people who will gain money are just the people who respond fast and who have better hmm, maths. okay. And uh, we were discussing a counter perspective today as well, right? Uh, where all the Bitcoin linked to Satoshi's wallet will actually be valued more than Bitcoin's market price.
Now, So what's that's your say true. on that? Because uh, the history of each Bitcoin is recorded really well. So, uh, do you think Satoshi's wallet will kind of increase the value of Bitcoin coming out from there in Mm, particular? And probably some people creating NFTs key. This Bitcoin can be transferred only through this NFT, the ownership of this Bitcoin. there's definitely a market for this because when we see there are some special blocks, so Bitcoin Hmm. minted in those blocks have an art value. There are colored sats and all of that. So a Bitcoin coming directly from Satoshi's wallet, as long as the demand supply thing happens, like what I can do is like I will not sell it on a DEX. I will list it. Let's say I will tweet about it that I have a Bitcoin coming from Satoshi's wallet and people will bid it. So it will be a parallel bidding mechanism for this being treated as an art form rather than this being a Bitcoin. But again, the depth of that market is something which I'm not very sure about because Hmm. it depends if one sat is coming out or if all of the 1 million Bitcoin is coming out. Because if all of the 1 million Bitcoin is coming out, then I don't think the art market of this 1 million Bitcoin has enough depth. So what I mean is like it will not the number of buyers who actually value a Bitcoin coming from Satoshi wallet higher than a Bitcoin coming from other wallet is not that amount of people who will be able to maybe buy in $100 billion of things, right? So Hmm. a couple of things coming out, of course they will have higher value, but if every painting is an art, then no painting is an art. Oh, interesting. So, probably if one Bitcoin comes, so what I can imagine at this point is if one Bitcoin is sold and then it will have a domino effect where the market starts going down, probably even 80-90%, probably more than that, 95%. And yeah, it could be more than that actually. I won't doubt, uh, like, there's no one who's there to regulate it. So it could theoretically be 100%. But Mhm. let's assume it's 95%. Market goes down. And 2-3 months down the line, we just see, oh, only one Bitcoin is sold from Satoshi's wallet. Then the prices again spike because now Satoshi's Bitcoin has a very high market value. Probably some collector will buy it at a very, very high price. They'll quote a very high price. And the market will adjust itself, obviously below that high price because market won't accept that price, but it will probably be more than from where it fell. And uh, after that, it could, and then all the cycles start happening again. Alts start recovering, and other projects start recovering. Meme coins are back. Probably this will also kind of push the NFT market because now you have a new kind of collectible. So popular guys, celebrity owned Bitcoin, celebrity owned Solana. Something will happen. People will Yeah. find ways to make more money. Uh, and so one possible solution could be when we see the first activity on Satoshi's wallet, if we ever see, then the Bitcoin community, can they decide to freeze a wallet? Is that possible? Like, They can always hard fork, but that's okay. not something which is easy to coordinate. And Hmm. I don't think a hard fork is something which people will do against Satoshi. Uh, Okay. How um, how many times has Bitcoin been forked? 1 minute, I मैं think search कर रहा हूँ. there were two bugs. Like one was somewhere during 2010, there was a bug Hmm. because of which infinite mint was permitted. So at that time, I think there was a rollback of the chain. That's Hmm. for sure. Huh. And I think there was also another incident in 2016, but that's Yes. something which I'll need to. Is there something happened in 2016? Huh. 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 Bitcoin Classic and Bitcoin Unlimited both launched. 17 cash launched. Okay. हाँ ठीक है. Not a particular hard fork. But It was just a 2010 mix. one is very interesting. Like it was when Satoshi was in Hmm. action, and I think he fixed a Okay. bug.
But what happened at that time was Oh, there was a bug in the source code where um, a very big amount of Bitcoin was possible to get minted, and maybe someone actually triggered that, and then we had oh, to the entire Bitcoin community had to roll it back. So that's again like if you talk to Ethereum maxis, this is something which they never fail to mention. okay. So, who, okay, who solves such bugs now? Like, if we come up with some bug. So these are, I think, they're Bitcoin core developers. Hmm. So they know how to fix things, but again, like you will need the node programs to get upgraded as well. So you need what you need is you need the updated code, and you need a certain amount of node operators to start running the updated code. So Okay. yeah, and if it makes sense, So, then they will run it. okay, so this is like Bitcoin, core Bitcoin, right? There's a whole new ecosystem being built around BTC-Fi as well. And how does that work, first thing? And second thing, again, how do we protect the BTC-Fi ecosystem? Like, okay, protecting Bitcoin's price is not in our hands, but probably protecting the value the BTC-Fi ecosystem provides today, and will it provide the same value after such an event? And if not, how do we protect it? Like, is there some way Mhm. we can think about? I think okay, so BTC-Fi ecosystem mainly has to do with adding programmability, and so it's building utility on top of Bitcoin. Huh? So if such a thing happens, so BTC-Fi will also get as affected as BTC price. But other Yes. than that, like I think BTC-Fi is definitely very good because 40 minutes block is not something which is desirable. Lightning was one of the first BTC-Fi they enabled where you could send payment in seconds, but then we are now improving upon a lot of things because a capital good needs to be utilized in business to actually become a capital good. So, Mm. and that is something which BTC-Fi will enable. But in such a event, uh, so Liquidity, BTC-Fi on right? top of Bitcoin, yeah. So those things might happen. But other than that, I don't think the infra will get affected much because BTC-Fi is just about utilizing BTC in a programmable way. Uh, so, like, when I think about this event, so Bitcoin came up in 2008, 2000. First block was minted in 2009 or 2010, I Mhm. guess. And it's been 14 years since then. We haven't seen activity in Satoshi's wallet. That's a good thing. But imagine we see activity in Satoshi's wallet in 2030 when this uh, ecosystem is 20 years old. Things have matured. Probably we have been accepted by governments. We are working with Mhm. banks. Or in another scenario, we have totally replaced the modern currency and we have moved on to a decentralized currency. And at that point, we have such an event happen. And it's like, so, anyways, the bull case of crypto is that we come in when the modern currency collapses, when dollar-based economy collapses, right? So now our economy is collapsing. It's a event as strong as 2008, and uh, this event might end up bringing us like 20 years in past back to the old regime with their flaws again. And along with that, if we look at the Bitcoin white paper, it states that it was inspired by the 2008 crash and to prevent such events in future. But Satoshi at this point has in his hands to create such a event in 2030 when we are accept. So the thing that is coming in my head now is like, imagine we have been adopted, crypto has become mainstream, and then Satoshi just thinks of, oh, let me show the world that 2008 can happen again.
over here. Uh, it's okay. Like I think we had multiple years where we suffered Hmm, more than 5% inflation. So hmm, because the total supply in Satoshi wallet is 5% of hmm. circulating supply, so it will be a um, Black Friday kind of event, but it will be a one-time event, and it's the last possible thing to go wrong. If it goes wrong, we will have a setback, 5 years, 10 years, 20 years, but we'll have a setback. And after that, we will move forward because, again, like the core utility of Bitcoin is not that 1 million of Bitcoin is logged in a wallet. The core utility still stands. Where our assumptions will fail in the terms of total circulating supply, and for that, there will be a lot of bloodbath which happens, and some people will profit, some people will lose. But after mass adoption, and if this event happens after mass adoption, so in the timeline we have before mass adoption, after mass adoption, and then this event happens, will governments move back to the old regime? Like, how much time will it take to recover for the crypto guys? First thing, how much time, like Mm. approx, if we look at Um, the history of events, and then in that time frame, will governments try to go back to the old regime? And if they try to, how do we stop them from doing that? um, I think the major benefiter of such an event will be Ethereum. Uh, Huh. So because Ethereum also is positioning themselves as money, there's a good project on Solana, or they also have 21 million supply. They are like we are better than Bitcoin. They are proof of work, positioning now as proof of value. I don't know what that means. Uh, Hmm. but now the thing is, I don't think going back to fiat actually makes a lot of sense if something happens because fiat is already the demerits are well known and proven out to be there. The population has already suffered. So what Hmm. could happen is like if the Bitcoin model fails, there could be some other. So blockchain as a technology will definitely have adoption. The the first digital asset built on top of that because of Lindy effect has a major advantage. And as soon as something happens in Bitcoin, its Lindy effect will get reset. So Lindy effect is basically the longer a system has lived, the longer chances a system will live in future as well. So Huh. because Bitcoin right now has 14 years without any hacks and everything, it's the safest currency. And anyone to beat this will need to launch it before 2009, and time travel is not possible, right? So Okay. Ethereum is 6 year, 7 year down the line from Bitcoin. So the second one, let's say, second major one, while there were other coins which were launched, but the second major launch which actually took off and is close to taking a position as money was Ethereum. So Lindy effect ka advantage will shift from Bitcoin to Ethereum is what I think. Hmm. Interesting and scary as well, but hmm. Yeah, it will be fun. Some people will make money. Huh. Let's not forget So that if this happens, not bad for everyone. As long as if you are good at maths, react fast. if it kind of shifts to Ethereum, then Ethereum's price will show a different behavior than the market, right? Yeah, yeah. And So okay, so the reserve huh, currency, like Ray Dalio model, everything starts with hmm, education, research, XYZ, and ends at a reserve currency. So the hmm. reserve currency right now, we are imagining it to be Bitcoin for at least the post-blockchain financial world. But I think if such a scenario happens, um, Ethereum could also have a good contention at What the reserve about currency Solana? position. Solana, no, 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 I don't think like the emission in Solana is so high that emissions is too high in Solana. So unless that is fixed, that's one problem. Other is again at Lindy effect, Solana is at number three. So if something happens to Okay, Ethereum, sorry, to Bitcoin, then it is Ethereum. If something happened to Ethereum, only then it is Solana because but Solana launched Solana might after stop Ethereum. working any day.
Yeah, Solana, they openly claim that we are not about liveness. We are about security in absence of double spend. Again, like when they say they are not about liveness, doesn't mean that they want to be down for 1 month. But they're just saying that if we have a downtime, it is okay. We don't care much about it as long as we fix it fast. Hmm. Okay. So, but if we look at Bitcoin as a currency hasn't been hacked for the past 14 years. And if you look at any modern country's currency, they have been like hacked as in governments have played around with their supply without actually Mhm. being open about it. And it's just like taking debt from the world when you play with supply of the currency. And it kind of makes me wonder ki we are still running on this hack on these hacked currencies. Our whole financial system is built around it. So quite funny. It is like again. Like there's a long history to this. Like Fed was established before that. Every US bank had its own version of dollar, wrap dollar, right? So then we had Okay. a standard. Yeah. So before Fed was established, every bank issued its own version of US dollar, and that dollar has had only that much strength as that bank has. So it's almost like how we wrap things on blockchain. So USDC, wrapped USDC, wrapped Aave USDC, wrapped Arbitrum Aave USDC, right? So that was this system. Then we came to the banking system. Then fractional reserve happened. And where we actually failed, I believe, was in 1971 when we stopped the convertibility of dollar Gold. directly into gold. So after that, we have been facing problems. And to fix that, I think a lot of people already have realized over the last 20 years Could you at various highlight a places. few problems that we One is face? Like, definitely supply shock, like it rises like crazy. So um, where these problems are really visible is when you see things like house affordability, right? huh, Uh, So the number of average years a person has to work to afford a basic house, that has kept on growing. You can also education. see these on education. You can see these in life expectancy at birth. In fact, there is an entire website called "What the fuck happened at 1971" .com. Let's So, open it. My oh, it screen will be shared very later. interesting. So just Google WTF happened in 1971. Uh, This one? yeah, this one. Okay. So let's look at some of the graphs. This one is growth in Growth and productivity and hourly compensation. And we can see the divergence in productivity and compensation, right? Because money is being devalued at whims and fancies of the people who are supposed to run the government after 1971. Before it was so convertible to dollar, so not possible. basically, all the influencers who are telling us to be more productive and we learn more money are lying to us because They're God. lying to us. Yes. Like being productive So, is a good thing. Like if you like being huh, productive, that will give you dopamine in itself. But yes. if you are like But money, you need to be lucky for that because yeah, governments are not saying the same Mm. thing. Data is Yeah, not saying the yeah. same For thing. example, same thing. Like in India, I have a friend in private equity, Huh, works 12 huh, hours a day. His friend in private equity in Norway works 5 hours a day. The Norway guy earns more than this. So this is not because the Norway guy is more productive. It's something hmm, else. huh. Norwegian sovereign Now fund is the let's largest. see this graph as well. Real So GDP. 1972, everything was like Yeah. the same line. And Uh, then, there oh, was a good so correlation between everything, but yeah, after that, so everything moving apart. interesting. This is a very good graph because because now this shows before 1970.
to 1971, Uh, everything was kind of the same. It went hand in hand. which made sense, right? Like real Yeah, GDP should which made a lot of sense. affect real wages, should affect median weekly earnings. But Huh. after 1971, everything is now moving like this. Wow. They're Let's even see. more scary graphs. Okay, I'll just scroll down. There was a graph, I think, which had to do with life Oh, expectancy and stuff. Okay, this is also see interesting. the income growth. Bottom 90% used to actually grow faster than the top 1%. Yeah, and then Oh, at 1971, it stopped. The system became against the bottom 90%. that's interesting. Is it? And people blame capitalism. Capitalism came way back. Capitalism is actually one of the best forces, I think, in human history. It's about, so, see, I don't think it's capitalism when you have a lot of regulations and sanctions. Capitalism means free markets. But what we are having right now is not capitalism. It's not at all capitalism. There are organizations which control free trade. There are no free markets. There are a lot of things. Like, it's not capitalism right now. What was capitalism was before 1971. Hmm. Let's see which other graph something that looks good. I really wanted to touch upon the health aspect of things. Dual income working groups. That's also interesting. We see This one. DINK, right? Dual income, no kids. Yeah. So this graph will Yes. explain you Ding. that. Okay. Interesting. Both spouses Is working it? has been rising from 1971. Okay. So we can go back to 1971. So if we have a time machine and we want to fix things, this is the year. Uh, yeah. Right now, I think we are trying to go back to 1910, 1917, when we didn't even have fractional reserve banking. But I think things were not broken till we had at least convertibility of dollar to gold, which stopped to exist in 9 because fractional reserve banking is just maths, right? So I can Ah, always model in the supply and the demand, and I can decide how much liquidity I want to have. But if I there's completely remove, it's difficult. there's one more thing I want to do, Abhi. Uh-huh. I've opened BTC chart. Let's Nice. go on all the dips. So first dip started. So like okay, it max maybe it shows from 2016 only. Let's go to 2017. If you remember what happened in 2017. I think this was Operation Choke Point, where Okay. so every ramps and everything was being uh, illegalized. So Uh, yeah, so this was, I think, Operation Choke Point 1.0, where bans, one of the thousand bans which China did, which other countries did, all of that happened. Uh, okay. ramps became illegal. All of that. People who were Uh, working on Bitcoin, they were getting kicked out of countries left, right, center. So all of that happened at 17. Uh, 2021 was epic. Summer, DeFi summer. DeFi I guess, summer, yeah, it went down, came NFT back. mania. It went down, came back, crashed completely. 3AC, Luna, Yes. FTX. FTX. So everything happened in this period. And Yeah. now we are back after Now we Trump. are back. So now we Do have you think other things which will this fall down. do you think this 2021 graph, I can see that repeat again. See, it's a Yeah, similar pattern. it's a very similar pattern. There's pump one, there's dip one, there's pump two, there's mega dip. So is it going to repeat? Again, like maybe not necessarily because the nature of Bitcoin is like the 4 year cycle is now, as people say, it's dead. So the amount of correlation which Bitcoin is having to real world is increasing, and real world typically has a 6 year cycle. So now we are somewhere between a 4 year cycle and 6 year cycle. That's one. And again, like market is a very fast adjusting mechanism. So whatever happens in fast, people factor. Sorry, whatever happens in past, people tend to factor that in. So because we are talking about this,
we are the market, right? So everyone is talking about this, Mhm. and everyone is thinking that this will happen. So it might not happen. It's a phase two Okay. system. You knowing that it happens affect the chances of it happening. Abhi, Shubham messaged that the podcast is too technical. Let's come Oh, back. Yes, let's come back. Uh, so, true, okay. true. So, I what I feel is DeFi is kind of following the same trajectory of TradFi, but in a smaller time span. So, according to that trajectory, what's the major event that will happen in Bitcoin before Satoshi sells or something? Let's just assume Satoshi is dead. Let's assume bull case of crypto where Satoshi is just dead I think and the major wallet event. cannot be accessed. I Huh. think the major bull case for Bitcoin is not something which Bitcoin needs to do. It is something which fiat currency needs to do, which is go in a downward spiral, free fall. Because it's so there are two philosophies, right? Like don't fix something if it's not broken, or something if can be improved, please improve. I think the world runs by the first philosophy, don't fix something which is not broken. So fiat has to break first. There are already cracks the size of Grand Canyons. I don't know what is that duct tape which is keeping it together, because USA is 45 trillion in debt. The house affordability is going up. If you see, people can't buy house, yeah, people can't buy house. Matlab, right now it's so expensive. So average median house buyer age in the US right now is 56. In India we don't have good enough data, but I'm pretty sure in India also it's rising. If you see people around you, they are not able to plan their future. They are scared to have kids because they don't know if they will be able to actually sustain those costs. The cost of raising a child is rising 16%. So there has to be a breaking point to all of this. In comparison to TradFi, where are we? Like which year? I think we are 2015, 16. Oh, okay. So we have Uh, reached. yeah, Okay. I think all the scams which happen in TradFi, they have been replicated in DeFi. Uh, Okay. okay, so it might not be 15, 16. It might be 2005, 6 because we are still Hmm. like 2008 crisis that is going to happen in Bitcoin as well, which was basically derivatives getting overpriced, CDS markets, state bonds getting priced as very good bonds. So that I think could be the next crash. But all in all, we So, have speed run all the crashes. what's going to what's that crash going to look like? Like where is that? So, for example, in 2008, it was the Lehman Brothers, I guess, because of which everything Mhm. started falling down. Domino started over there. The spiral started over there. What's it? What's it going to look like for crypto? The crash or Okay. DeFi? Okay, this is very interesting. And again, like these are just my assumptions. Like this is not meant to be any FUD. Uh, Mhm. so 2008 crash was banking crash where a lot of lending borrowing activity happened on very high leverage. So what could explode is again some lending borrowing protocol which allows some leverage. That's one assumption. Because uh, so I don't know. I don't know. Uh, Okay, no ठीक names, है but ठीक yeah, like है स्टैनी से डर लगता है okay Stanley is a great guy. I wish Aave never explodes, and hopefully it's not Aave, like because Stanley did a tremendous job. All of these DeFi folks are doing tremendous job. So yes a lot of times it doesn't happen because there's a crooked person. A lot of times it happens inside. A lot of times it happens because there's a crooked person outside. So who can हाँ attack, right? Again, like yes it's an attack defense. We build up fortress, but lending, leveraged, leveraged lending, in some form, like of CDS or something, is where I think the next crash could be because the previous one I think happened at trading, right? FTX, Luna, all of that, algo stable coins. So yeah, next could be.
could be lending. But I hope it doesn't happen that way. But yeah, Hmm. like this is something which we have been seeing for a lot of time. We are prepared. Yeah. Okay. Interesting. So, where do we take the conversation next? Up. Hmm. So, Um, I had one more thing. So, for example, we have the lending borrowing crash, and it's before we get time for recovery. Satoshi's wallet gets active at that point. How tough is it to hack a wallet? okay. 32 years of constant. So it will take 32 years to break a basic password to hack a wallet. Private key is very long, 28 characters, 32 characters. It's going to take hundreds of years unless someone has Okay. built really, really fast computers which we don't know about. Okay. Quantum And again, it's a computers. probability base, it's a probability game, Uh-huh. so it might happen very fast also. Again, like, but the probability of that is very less, so we can Very have a low. Bayesian distribution कि एक दिन में हैक होने का chances है 0.0001% और Hmm. 100% हैक होने का chance is hundreds of years. Huh. Uh, so before like kind of moving on, what are the three main characteristics of Bitcoin जिसकी वजह से it has survived for such a long time? Even though we don't really have like any institutional regulations, any institutional backing from the start, it has mainly been community driven, the development and all of it. So, I think one thing is like emissions was very smart. No better way to bootstrap activity than emissions. So because uh, you run a miner, you get a lot of Bitcoin, so you would do that. So people used to run miners and limited supply with emissions. That was great. Then overall tech was solid, like so it was transferable. All of that was true, but I think the major advantage was it was made by really, really smart people who built something really good and they were able to evangelize about it in a very organic way. Like it took 2, 3 years to Bitcoin to have a price, but no one was in a hurry. So yes. that was really cool. But emissions, I think, is number one factor because people don't do anything without an incentive for money. And in the starting days, emissions were so high, and the upside was so high that, for example, like there is 15 million, let's say, Bitcoin in circulation. You are getting okay, so 3.25, 6.5. Okay, you get 70, 80 Bitcoin to mine one block, very less miners. You would mine, and then you would think about 10 years later that actually, if the proposal of Bitcoin is actually what is going to happen, then you definitely know that this thing is going to a million in the next 20 years. And if you had that conviction, those emissions would support you. So emissions actually made sure that the people who had convictions and skills kept on joining. So even Yeah. if you had two people to explain, people explained about this. So all in all, base is definitely fixed supply with very clear emissions. Like that is another because a lot of protocols have emissions which depends on a lot of things. But Bitcoin emission was defined for the next 100 years, 1,000 years, 10,000 years. It will Okay. get half every 4 years. Right now, I think it's at 3.125 Bitcoin per block. But now, four halvings back, it was maybe at 30, 35. Or because less miners were there, so it was very, very easy to mine Bitcoin. Like you could do that from a laptop or a good enough graphics card. Now you need an entire farm to farm one Bitcoin. So this model, I think, is something which was very innovative, and every other project is utilizing the same model, right? But that's something which Bitcoin innovated. So Shubham has also joined. He has Oh, a few GM. questions. Yes. Sure, sure. Hello. हाँ, चलो अरे यार
Shubham bhai. My first Yes. question is, what is this app? Oh, this is a very cool अरे app. this is it's a very cool app. It makes life easy. Okay, Streaming बहुत आसान तो हो जाती है. माय क्वेश्चन इज दैट कि जितनी तेजी से टेक इवॉल्व कर रहा है, मेरा लैग हो रहा है, क्या आवाज जा रही है? हाँ हाँ। हाँ हाँ बढ़िया. Yes. वेट वेट वेट, ओके रुको, मुझे वीपीएन हटाने दो, यहाँ वीपीएन नहीं चल रहा है, मेरा वीपीएन गुड। Okay. मैं तब तक ऐप का कंटेक्स्ट दे दूं क्या? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज दिस ऐप इज आल्सो a Web3 app. Hadal is a DeepIn. यस 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 प्लीज। So it's Zoom, but it's decentralized. Decentralized as in, um, so it's a RPC, RPC node, sorry, RTC, real-time communication. To Zoom here, but everyone is able to run a node where this application, so iska server, let's say, is decentralized. Everyone is running a node and it's running on top of the the system which is being run on that node. So everyone owns a pie of the running capacity of it. कैसे समझाएं, like काफी मुश्किल है डीप इन सिस्टम समझाना in a And way. why I am using it? It allows me to stream directly True, from the true. meeting. In Yes. fact, like So your core proposition cannot be decentralization. It has to give better UX. But yeah. overall, by Hadal is a decentralized physical infrastructure network where Zoom, Google Meet, and everything is not running in a centralized way. It has various nodes which are hosting RTC servers, which is running Hadal. It will have a token So very soon. वॉइस एको हो रहा है. Echo, है मेरे पास तो एक इट्स मिनट. ओके. Let me check in the live stream. Shubham, with me, you can ask questions. I'll just check. Shubham, you can hear us? Um, uh, 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 I guess it's not echoing now. अब sort कर दिया. uh, nice, nice. Wait, I think Yes. Shubham's VPN still needs to. हाँ Yes. हाँ, Be fixed. नहीं नहीं, मेरा Now we can. रिटार्ड है फोन थोड़ा, Okay. फोन रिटार्ड है। ओके, सो माय क्वेश्चन इज कि टेक जो है बहुत तेजी से इवॉल्व कर रहा है, राइट? टेक इज लाइक, पहले 100 साल लगा टू गेट पीपल लाइक थोड़ा बात करने में, फेसबुक वगैरह ये सब, ठीक है। उसके बाद हाँ. 10 साल में काफी इवॉल्व हो गया पूरा, डिसेंट्रलाइज स्टफ। तो बहुत सारी चीजें इरेलेवेंट हो गई हैं। कैश लोग यूज नहीं करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कैश का माइंड शेयर होता तो बहुत घट गया होता अभी तक, राइट? तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, क्रिप्टो इरेलेवेंट कब हो जाएगा? जितनी तेजी से ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, डोंट यू थिंक कि क्रिप्टो इरेलेवेंट हो जाएगा इन द कमिंग? मान लीजिए वेब 4 आ गया, समथिंग इवन बेटर, जो कि क्रिप्टो से तेज है, थोड़ा और अनट्रेसेबल है, क्योंकि अभी भी बहुत Hmm. सारी चीजें अनट्रेसेबल है। और क्योंकि Mhm. वेब 2 में भी बहुत सारी चीजें अनट्रेसेबल थी, टेररिज्म था उसमें, जो मनी जाता था वो भी ट्रेस नहीं होता था, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बैक उसको मिलता था। बिकॉज हु आर द पीपल हु आर ट्रेसिंग? वो लोग गवर्नमेंट के टॉप हैं, या फिर कोई बहुत बड़े बड़े वेल्स हैं जो कि ट्रैक कर रहे हैं, कोई भगवान तो ट्रैक नहीं कर रहे हैं। तो Mhm. ये पूरा डोमेन जो है ये कब हाईजैक हो जाएगा? देयर इज अ पॉइंट व्हेन इट विल गेट हाईजैक, क्योंकि बिटकॉइन मोस्टली इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के पास ही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बिटकॉइन बहुत ज्यादा पैसे का हो जाएगा, तो जिनके पास हाँ. ऑलरेडी अभी बहुत ज्यादा है वो तो और ज्यादा अमीर हो जाएंगे, तो दे विल मैनिपुलेट एवरीथिंग, राइट? मतलब दो तो क्लियर सिनेरियो है. One people दैट always वाज माय talk क्वेश्चन। about is so one scenario which people always talk about is quantum because Bitcoin and all of so cryptocurrency is one part. Crypto तो main cryptography है. तो और cryptography को तोड़ने वाला टेक ही क्वांटम है because quantum helps you.
um, run a lot of simulations in a very small amount of time to actually crack that. तो एक major threat quantum है, but again there are workarounds to that where DAG, decentralized, मतलब there are some tech jargons which people keep throwing about कि why, how they will prevent when quantum attack happens. तो बट एक वो है क्योंकि क्रिप्टोग्राफिक क्वांटम तोड़ सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अब क्योंकि एमिशंस हाफ होते जाता है एवरी 4 इयर्स में, और एमिशंस इज व्हाट माइनर्स अर्न फ्रॉम। तो अब आज से 100 साल बाद अगर एमिशन इज वेरी स्मॉल, so there is no incentive for anyone to run a node. तो उस सिनेरियो के बारे में भी people always talk about कि when that happens it could lead to the Bitcoin network going down. But वही दोनों के पास while these are the problems which people talk about, there are people who also talk about solutions to these problems. तो अगर क्वांटम आया तो उसके डील करने के लिए there are quantum resistant blockchains which are being researched upon. अगर माइनिंग रिवॉर्ड्स बहुत कम हो गया तो आगे लाइक BTC 5 में जो L2 वगैरह बन रहे हैं वो भी तो अपना खुद का रिवॉर्ड भी माइनर्स तक पहुंचाएंगे। तो मे बी माइनर्स विल नॉट नीड टू डिपेंड जस्ट ऑन बिटकॉइन रिवॉर्ड्स, दे माइट आल्सो गेट रिवॉर्ड्स फ्रॉम थिंग्स लाइक सिट्रिया, टाची, नाकामोटो हब, ऑल ऑफ दैट। जो पूरा ऊपर का इकोसिस्टम बनेगा वो भी रिवॉर्ड दे सकता है। बट मतलब मेन तो आई थिंक व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज एज लॉन्ग एज पीपल अंडरस्टैंड कि फिएट का वैल्यू नहीं है उतना, बिकॉज fiat tends to get centralized and then tends to start getting manipulated. Fiat is basically promise, promise currency का वैल्यू नहीं है, वो एक बार लोग समझ जाएंगे तो फिर दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट कि क्रिप्टो अगर जा भी रहा है तो नेक्स्ट जो आएगा इट हैज टू बी बेटर देन दिस, नॉट गो रिवर्स। Okay. ओके। Mm. So, हुँ, but always there's one threat key institutions captured a lot of Bitcoin, and is there a way to economically hack Bitcoin? Like, ये question, huh? At present, Institutions do that. can we economically hack Bitcoin? Like, hack as in Uh, it इतना ज्यादा सप्लाई कंट्रोल कर पाए कि नाउ फ्रॉम अस रिलीजिंग सप्लाई, जैसे सतोशी अपने सप्लाई को अगर वापस लिक्विड करता है मार्केट में, ही मैनिपुलेट्स द होल मार्केट, राइट? सो उस लेवल पे कैन एन इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिकली हैक बिटकॉइन, there is इंस्टीट्यूशन और there is मल्टीपल? there is a scenario. It's basically 51% attack. So if हाँ, 51% of the people align and uh, they do it, they can do anything. So 49% cannot be protected from 51%, but उसके लिए 51% will need to be aligned. And there, I don't think there is a scenario where US will coordinate with North Korea, who will coordinate with China, who will coordinate with Sudan. तो 51% उतना coordination हो नहीं पाएगा, but economics wise I think वही है, 51% attack is one scenario. There are some proposals or actions which can be passed only after three-fourth majority or two-third majority. So these are basically the numbers which we need to be watching out for. कि जैसे 51% लोग कोल्यूड किए वो सर्टेन चीजें एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जैसे ही 60% 66% किया वो सर्टेन चीजें एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक हैक इज इन दैट डायरेक्शन। ओके, सो अभी मार्केट कैप ऑफ बिटकॉइन इज 2.7 ट्रिलियन एंड 51% हुआ अराउंड 1 ट्रिलियन। क्या? हाँ, सो राइट नाउ एक बार टॉप होल्डर्स देखते हैं। सो हाँ, बेसिकली आई फॉरगॉट टू लिस्ट, मतलब उसका नाम क्या है एग्जैक्ट, बट ऊपर से कितने एंटिटीज को मैं पकड़ूंगा तो 51% तक पहुंचते हैं। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कि 5 लोग कॉल्यूट करेंगे तो नेटवर्क फटेगा, कि 10 लोग कॉल्यूट करेंगे कि नेटवर्क फटेगा, कि 100 लोग कॉल्यूट करेंगे। द हायर दैट नंबर इज द बेटर, द मोर सेफ दैट नेटवर्क इज। चलो, आई तो एम राइट नाउ शेयरिंग तो माय पांच स्क्रीन परसेंट अगेन। तो सेलर के पास है। हाँ, सतोशी को हम लोग राइट ऑफ करके रखे हैं तो उसको हटा देते यस। हैं। सो सेलर, देन वी हैव BCG, कॉइनबेस। कॉइनबेस। कितना कितना है सबके पास परसेंटेज वाइज कुछ है क्या? परसेंटेज वाइज तो नहीं है।
Coinbase has 104 billion, ठीक है, तो so 1 about मिलियन है सिर्फ 1%. कॉइनबेस। हाँ, और वन पे कौन है? सत, सतोशी, हटा दिया उसको। One पे Satoshi. ब्लैक BlackRock. अरे रॉक ये अभी लिस्ट टॉप 10 पे है कि नहीं पता। ओ, ना आ ना, गया। ये एक बार देखते ना, वो नहीं, हाँ, नॉर्मल लिस्ट ही होगा। एक एक्सेल टेबल अरे को ब्लैक प्रोवाइड, रॉक हाँ हाँ, इमेजेस में आ गया आ एक्सेल गया. टेबल को है। ओ मिल, नाइस नाइस। स्ट्रेटेजी। ब्लैक रॉक is greater than strategy. दे आर showing their size and power. Hmm. Yes. So तो कितना है टॉप 10 का टोटल? top 10 का total comes out to be 10% लगभग, जितना मैं वे देख पा रहा हूँ. तब नहीं, तो चिल है। दैट वाज माय क्वेश्चन, लाइक अगर सारे टॉप प्लेयर्स ये सोचे कि हाँ एनफ कर तो लेट्स टेक आवर प्रॉफिट एंड मूव ऑन, तो वो समय क्या होगा? लाइक दिस इज अ गुड पॉसिबिलिटी। मान लेते हैं कि कोई क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, तो उन लोगों को पहले पता है और वो लोग सारा पैसा निकाल लिए और उसके बाद वो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना नहीं चाहे, या फिर अगर करना चाहे भी तो अगर मान लीजिए कोई चीज 90% गिर जाती है तो उसको 10 गुना होना पड़ेगा वापस उसी प्राइस पे आने के लिए। और क्रिप्टो जितना वॉलेटाइल है। 10% तो गिरा है निकालना मुश्किल बिटकॉइन. है, क्योंकि हाँ लेकिन तो उस समय निकाल, प्राइस कितना कम था ना। हाँ, तो निकालने में प्रॉब्लम क्या होगा ना, वंस यू स्टार्ट सेलिंग द प्राइस स्टार्ट्स ड्रॉपिंग, तो every हम्म subsequent bitcoin which you sell will be sold for cheaper than the previous bitcoin you sold. So when you are operating with 1 million bitcoin and you are trying to exit, it cannot be a normal dex transaction. Usko you will have to divide into a lot of parts and do it very slowly. That is something which is practically not possible without affecting the price and price of the bitcoin, and in turn the amount which you are able to get out with. So basically $100 billion you will start selling. If you had $100 billion in Bitcoin, you start selling. And if you finish the transaction in let's say 10 days, so you will be able to exit with only $50 billion, क्योंकि तुम आधा मार्केट ही खराब कर चुके होगे। बिटकॉइन का हम्म प्राइस ही उतना ज्यादा गिर जाएगा। तो एंट्री एग्जिट बहुत फ्री नहीं है। हाँ, एट आवर साइज इट इज वेरी फ्री, बट एट देयर साइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। So this is like uh, one more reason why top players won't coordinate. Ki, oh, if I sell, then oh, that person could sell before me, so they would get a better price, and we हाँ, cannot sell at the same time. So he that gets is also तो upset. one आई reason। गेस हाँ, आई गेस कि लाइक वी कंपेयर बिटकॉइन टू द डिजिटल गोल्ड, राइट? कि गोल्ड है, ये है, वो है। बट yep। एट दिस पॉइंट और आज से पहले भी जितना फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस तो लाइक हजारों लाखों साल से है, जो भी फाइनेंस रहा हो, पत्ता ही रहा हो क्यों ना, तो हाँ, देयर वाज ऑलवेज अ कोरिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, राइट? कि दुनिया में हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, ये एक स्टेटमेंट है, बट इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि हाँ खरीदी जा सकती है। तो अभी हम लोग गोल्ड को और फिएट को, लाइक हम लोग बेसिकली फिएट यूज करते हैं, तो हम लोग गोल्ड खरीदते हैं उस चीज में। तो अभी गोल्ड 1 लाख रुपए है, पहले कभी 9 हजार 10 हजार था, तो पीपल जो है लोग समझते थे कि हाँ 10 लाख, 1 लाख रुपए का 10 ग्राम है, 1 लाख वो देखे हैं, तो उनका माइंड जो है वो कर पाता है पैसे को लेके कि हाँ इतना 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 है। बट लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी से अगर हम लोग देखें कि एक टाइम आएगा जब बिटकॉइन ऐसा 1 करोड़ का हो जाएगा, 1 करोड़ का तो अभी बस ये है, आ दस गया। 100 करोड़ का हो जाएगा, हाँ 100 करोड़ का हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, तो उसके सामने लाइक डॉलर या फिर आईएनआर कुछ वैल्यू नहीं, 0.0000 ये रखेगा। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं होगी कि ऑलरेडी इतने पैसे का हो गया है, अब Stats. हम लोग कभी एक Stats। एक हम लोग खरीद नहीं पाएंगे, कभी एक नहीं खरीद पाएंगे, या फिर कभी हाँ, इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लोग देखेंगे ना कि ब्लैक रॉक के पास ऐसा 100 मिलियन है बिटकॉइन, तो हाँ, एक वो एब्सोल्युटली। नहीं होगा कि, नहीं, ये एक्चुअली तो लाइक वेरी 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 गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा चीज है इसका। सो ओके, सो बिटकॉइन वन, सो बिटकॉइन डजंट एग्जिस्ट। However controversial it sounds, there is nothing in the world called Bitcoin. What exists is one sats, and 10 to the power 8 sats is called one Bitcoin. Bitcoin का fundamental existence नहीं है। Fundamental existence है satoshis का। एक satoshi is one satoshi, और 10 to the power 8 satoshi को हम लोग एक Bitcoin बुलाते हैं। तो अभी so denomination change होना है। So right now while we are measuring things in Bitcoin,
डाउन द फ्यूचर विल स्टार्ट मेजरिंग थिंग इन सैट्स कि मेरा कार 5 लाख सैट्स का है, मेरा बाइक 2 लाख सैट्स का है। तो वो जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है यहाँ पे ब्रेक होगा। एंड प्रोबेबली नॉमेनक्लेचर भी चेंज हो जाएगा कि सैट को ही बिटकॉइन मान लेंगे, हाँ हाँ, सैट को नॉमेनक्लेचर ही, चेंज भाई करके। बिटकॉइन तो कुछ है भी नहीं एक्चुअली। आई थिंक जैक हाँ। डॉर्सी ही अभी लाया है बी आर यस, सी यस। BIP 771, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट चेक। सो उसमें वही है कि अब सैट्स में बात करना चालू करेंगे। हाँ। सो फॉलोइंग अप टू दिस, BIP 177, if anyone wants to read, जॉन करवालो, BIP 177। सो आई गेस शुभम ने जब पॉइंट आउट किया ना कि we usually associate money with gold, even though it's not backed by gold, abhi, but we still associate it with gold. But agar if we go to the era where it was backed by gold, at that time, money basically had weight. You could buy something with money, gold, that had weight. Gold has a density, and वो weight हमेशा same रहने वाला है. So you kind of had a physical aspect to money, and when you remove backing, वो physical aspect हमेशा के लिए चला गया money का. And I guess Saylor talks a lot about this. कि crypto is bringing back the physical aspect of money, but not in terms of weight, in terms of velocity. क्योंकि now we don't have central authorities which are kind of taking in money, not letting you see how that money is being rotated inside, right? And then just giving out money. It's like a batch. It's like a bucket. But सेलर बोल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में क्या है, बकेट है ही नहीं, यहाँ पर बैच नहीं बन रहा, तो यहाँ पर मनी आ रहा है, मान लो दिस इज वन बिटकॉइन एंड दिस हैज अ एड्रेस ऑफ इट, एंड व्हेन दिस ट्रैवल्स आई कैन ट्रैक इस एड्रेस, इस बिटकॉइन का एग्जैक्ट फ्लो क्या हुआ है, एंड व्हेन आई कैन ट्रैक इट्स फ्लो आई हैव अ फिजिकल एस्पेक्ट टू इट, because flow is physical, flow is something people can relate with, just like weight. तो Saylor says कि economics में people don't really talk a lot about this post the world where dollar was removed from the gold standard. Gold standard was discontinued. But before that, economics was actually just like physics. It had a physical value. Okay. Um, I don't know, we lost Sid. Shubham, you are still there, right? यस 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 यस। Nice, nice. हाँ, सिड का आपको नहीं लाइट लगता गया। है कि वेब थ्री का नाम थोड़ा चेंज करना चाहिए? लाइक वेब थ्री डजंट गिव अस एनीथिंग। हाँ मतलब कोई एक ही है, लाइक Web3 वो रीड, Web 1 was read, Web 2 read write, Web 3 read write own. All of these are very theoretical things. Uh, but लाइक in uh, मेरा ये there is भी a था blending एक, लाइक problem. मैं काफी दिनों से, हाँ हाँ, ने नोमेनक्लेचर में तो, क्योंकि वेब थ्री से पहले लाइक कोई इसको वेब टू नहीं बोलता था। हाँ राइट। वही Web 3 आया तो फिर हम लोग अचानक से Web 1 Web 2 Web 3 तीनों लेके आए। हाँ। हम्म। और मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक अभी इंटरनेट बहुत रीसेंट है, अगर हम लोग बहुत बड़े टाइमलाइन की बात करें तो इंटरनेट अभी भी बहुत रीसेंट है, लाइक बहुत ज्यादा दिन हुआ नहीं है, 20 साल भी नहीं हुए हैं अभी अच्छे से। राइट। तो ओके। हाँ धीरे धीरे मतलब लोगों में अवेयर, हाँ, लाइक अडॉप्शन को इंडिया में या फिर वर्ल्ड में ऐसा 2000 में, 2000 के आसपास के वीडियोस आपको मिलेंगे इंटरनेट पे, हम्म, बट ऐसा नहीं था कि 2000 में कॉमन नेम था इंटरनेट। राइट। हम्म, तो लोगों में और इंडिया में तो खास करके आई गेस जियो के बाद बहुत ज्यादा इंटरनेट वाली लिटरेसी आई है। तो yeah, हमने अभी लाइक 1900 का जो क्रैश था, या फिर जो बहुत हैवी हैवी क्रैशेस थे, लाइक हम्म, फाइनेंशियल पूरा वर्ल्ड वॉर्स वाले क्रैशेस, तो उस हम्म, समय लोगों का न्यूज का बस एक जरिया था, जो कि था न्यूज़पेपर, या फिर कोई बंदा हो गया वो आपके बता रहा है। और उस समय स्टॉक मार्केट में या टेलीग्राम। फिर कहीं पे इतना इन्वॉल्व, टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम, दैट टेलीग्राम। ओके ओके, यस यस यस। दैट टेलीग्राम। मॉर्स तो कोड पे जिसपे अब भेजते मान थे। लेते हैं, हाँ तोता, तोता रे हाँ कबूतर। तो हाँ। लाइक मेरा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इफ एक वैसा क्रैश अभी होता है, ठीक है, तो लाइक जिस चीज में ज्यादा लिक्विडिटी होती है, बिकता भी वही चीज जल्दी है। राइट। क्योंकि हम्म, जो चीज लाइक जमीन हम इतनी जल्दी नहीं बेच सकते हैं, तो लोग जमीन छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है। तो हाँ लाइक जब वो क्रैश होगा और
क्रिप्टो को खरीदने के लिए लोग नहीं रहेंगे, लाइक मान लीजिए कि कोई खर क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों का डॉलर का वैल्यू गिर गया है, तो लाइक हर कुछ का वैल्यू गिर जाएगा। तो इफ दैट क्रैश हैपन, क्रिप्टो को रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? और मान लीजिए बिटकॉइन रिकवर हो भी जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हम्म, प्रोजेक्ट्स होंगे जिनकी फंडिंग चली जाएगी, जिनके पास अभी इतना पैसा नहीं है, तो वो सब तो सारे खत्म हो जाएंगे। लाइक अगर स्टॉक मार्केट से हम लोग इसको इसको कनेक्ट करें, तो स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि जैसे एशियन पेंट्स थी, वो 1950 का वॉर वगैरह देखी है, 71 का वॉर देखी है, बट उनके पास फैक्ट्रीज थे, उनके पास प्रोडक्ट्स था, तो वो बेच के उसको वापस लाते थे। बट क्रिप्टो पूरा मनी बेस्ड है, इनका प्रोडक्ट भी पैसा है, राइट? तो हम्म, बहुत सारे प्रोजेक्ट मर नहीं जाएंगे ऐसा, अगर ऐसा कोई तगड़ा क्रैश आया, क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा है, लोग इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, और इंटरनेट है तो पैनिक भी बढ़ेगा। तो प्रोजेक्ट डेड होने से लाइक वो लोग कोई कॉशन ले रहे हैं कि मेरा प्रोजेक्ट डेड कैसे नहीं हो, एक क्योंकि हम्म, एक इको चेम्बर से बाहर निकलना होगा इस चीज को, राइट? क्योंकि हाँ, सिटी अभी भी बहुत बड़ा एक इको चेम्बर है, राइट? बहुत कम लोग हैं। यप, और ब्लैक रॉक भी हो गया, उतना पैसा नहीं डाल रहा होगा क्रिप्टो में, मैंने चेक नहीं किया डेटा जितना वो स्टॉक मार्केट में डाला है, राइट? हाँ, हाँ, वो तो लोग पॉकेट मनी डाल रहे हैं अभी बस, लाइक दे आर नॉट गोइंग इट एट साइज। हाँ, तो व्हाट विल सेव क्रिप्टो अगर वैसा कोई क्रैश आता है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 होता है? यार, क्रिप्टो, पहला चीज तो काफी प्रोजेक्ट मरेंगे। व्हाट यू सेड एब्सोल्युटली राइट। डॉट कॉम बबल हम्म, आया था, मतलब वो पूरा एक ग्राफ आता है ना, यूफोरिया, फिर हाँ। स्लम्प, फिर मैच्योरिटी। तो वो हम्म, काफी काफी प्रोजेक्ट मरेंगे, लाइक इट हैपेंस विद एवरी टेक्निकल इनोवेशन। डॉट कॉम क्रैश भी आया था, काफी प्रोजेक्ट्स मरे थे। वेयर इज याहू? नो वेयर। तो वैसे काफी चीजें मरेंगे, बट काफी चीजें बचेंगे भी। पीपल हु आर बिल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म। अब क्रिप्टो का मेन तो सीन क्या है कि अकाउंटिंग, लाइक व्हाट इज क्रिप्टो? क्रिप्टो इज अ वे टू अकाउंट फॉर थिंग्स। तो जो क्रैश है, आई बिलीव क्रैश ऑलरेडी हो रहा है, वो स्टार्ट होना बाकी नहीं है, वो हो रहा है। क्योंकि आई हम्म, 30% काइंड ऑफ 30% ऑफ ऑल करेंसी इन सर्कुलेशन आई थिंक हैज बीन प्रिंटेड इन द लास्ट 5-6 years। तो हम लोग क्रैश में है, just people are not talking about it openly. Uh, Things are moving very fast. Or where crypto excels is like the accounts which are kept on blockchain, kept transparent. अभी let's say there's a digital war as well, तो साइबर अटैक्स होंगे, बैंक्स के सर्वर उड़ा दिए, फिर किसका कितना पैसा हम्म, किसको पता, राइट? तो वो सब जगह पे क्रिप्टो हाँ, इज अ सिस्टम विच इज सेफ। उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स है जो एक्चुअली चीजें बिल्ड किए हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स है जो बस इन्वेस्टमेंट उठाए हैं और हाइप क्रिएट किए हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स है जो कि कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन, लाइक बिकॉज ऑफ ऑल थ्री इश्यूज, सम टोटल फ्रॉड्स दे विल डाई, सम टोटल गुड पीपल दे विल सर्वाइव, एंड सम गुड पीपल हाँ, will die because of skill issue, some good people will die because of pure luck. So all राइट। of that will happen, but the way in which crypto का क्या, like it's a fastest global state, कि कुछ भी जापान में वो हम्म, अमेरिका में वेरीफाइबली पता चल जाए इन 10 मिली सेकेंड कुछ लगता है जापान से अमेरिका एक पिंग को ट्रेवल करने में, एंड दैट शुड बी द अमाउंट ऑफ टाइम इन विच द अकाउंट्स कैन गेट अपडेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस इज व्हाट पीपल आर टारगेटिंग। बैंक में क्या है कि व्हेन यू सेंड मनी इट विल टेक टू डेज टू यहाँ से भेजे अमेरिका पहुंचने में, ऑल ऑफ दैट। हम्म, स्टॉक खरीदो तो T+1 T+2 सेटलमेंट है। इफ यू बाय फ्रॉम जीरोधा यू विल फाइंड कि मेरा वो डीमैट अकाउंट में स्टॉक एक दिन बाद पहुंचा। तो हाँ। all of that is fine, but I think yeah, like some projects will survive, some projects will die. Crypto right now is the most efficient technology to keep a record of accounts, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो किसी ने कमेंट किया है कि डू यू थिंक गवर्नमेंट कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट क्रिप्टो? दे आर पुटिंग 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो बट नॉट यूटिलाइजिंग डिसेंट्रलाइजेशन। Hmm, अब डिपेंड्स, लाइक वही कि टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक होती है रिएक्टिव, एक होती है इनोवेटिव। आई थिंक व्हाट इंडिया इज डूइंग राइट नाउ इज रिएक्टिव। सो ठीक है, 30% टैक्स से काफी इनोसेंट लोग बच जाएंगे, बट इंडिया, लाइक मतलब अगेन इट्स अ गेम थ्योरी।
कि कोई पहले अडॉप्ट करेगा, कोई बाद में अडॉप्ट करेगा, बट वन हु डजंट अडॉप्ट विल हैव कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज ओवर पर्सन हु अडॉप्ट्स। तो हम्म, हारना किसी को नहीं है। व्हेन अब इंडिया का स्टैंड क्या था, पहले इलीगल, उसके बाद फिर 30% टैक्स, बट अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट बोला है कि इलीगल नहीं कर सकते हो, रेगुलेट करो, तो वो पूरा कर्व जाएगा। बट इन द एंड इंडिया विल हैव टू अडॉप्ट, लाइक क्रिप्टो तो इम्प्लीमेंट हो ही रहा है। अब हम्म, इंडिया उसको कब एक्सेप्ट करेगा इज अ इशू। लाइक वही क्वेश्चन है। आई थिंक वेब टू के टाइम पे भी काफी चीजें हुई थी। आई थिंक ओला वाज हाँ इलीगल, हाँ, फ्लिपकार्ट वाज इलीगल, ये सारे हम्म, इलीगल ही हम्म, थे। अभी दीज आर हाउस होल्ड नेम्स। तो क्रिप्टो हाँ, विल आल्सो हैव, क्योंकि कैब मतलब व्हाट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कैब ड्राइवर एंड द कंपनी कॉल्ड ओला एंड द पैसेंजर शुभम और रवि, वो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। समवन हैड टू राइट डाउन दोस एंड देन उस कॉन्ट्रैक्ट्स पे लोग चैलेंज किए, दोस कॉन्ट्रैक्ट्स बिकेम सॉलिड। तो वो पूरा इवोल्यूशन हुआ। तो क्रिप्टो भी सेम इवोल्यूशन से आई थिंक आगे जाएगा। हम्म, ओके। ओह, सीड इज मैसेजिंग कि लाइव एंडेड, आई गेस कोई नहीं, चिल है, अपने को तो मजा आ रहा है। लाइव, अच्छा वो 11 बजे तक ही किया होगा ना? हाँ, कुड भी, मैं देखता हूँ, लिंक तो है। उसको भेजिए। ओके, मैं और क्वेश्चंस पूछोगे आपसे? अरे आई एम ऑलवेज लाइव, मजा आता है बात करने में इन जनरल। ओके, लाइव आई थिंक इज वर्किंग। आई एम ऑन हाँ लाइव। लाइव है, मैं अपने टैब पे खोला हूँ, लाइव है। लाइव चल रहा है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, और कोई कुछ पूछा है क्या? क्वेश्चंस, यू थिंक गवर्नमेंट कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट क्रिप्टो? हाँ, क्रिप्टो तो government will just need to regulate it. Implementation तो is up to techies who are actually doing that. Like IRCTC तो NFTs रिलीज कर दिया है। बस स्टेबल कॉइन हाँ, लॉन्च होना बाकी है इंडिया का। आपको नहीं ये लगता है कि गवर्नमेंट जो है नहीं चाहेगी कि क्रिप्टो लॉन्च हो, वर्ल्ड स्केल पे ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो में हो, क्योंकि वो करप्शन को एक्सपोज कर देगा? हाँ हाँ, गवर्नमेंट डजंट वांट, बट अगेन लाइक 100% गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है ना, बिकॉज गवर्नमेंट हम्म, को बनना है सिटीजन्स। अब गवर्नमेंट में कुछ फ्लॉज है तो सिटीजन्स विल फिक्स दैट। अब हेलो। उसमें, हाँ, अब गवर्नमेंट उसमें रोक पाएगी नहीं रोक पाएगी, वो नहीं रोक पाएगी, क्योंकि हेलो। हम्म, हाँ, अरे स्प्रेड आ गया वापस, नाइस। तो क्वेश्चन अभी वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, गवर्नमेंट क्रिप्टो को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहेगी तो रोक सकती है। तो पॉइंट क्वेश्चन आंसर है कि नहीं करना चाहेगी, दैट्स ट्रू, बट रोक सकती है, नो। बैटरी क्योंकि, यूज। हाँ, क्योंकि इंडिया अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया और अभी पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करने लगा है, एंड तो पाकिस्तान अरे का हाँ, ट्रेजरी बढ़ जाएगा। एंड इफ आवर एनिमी लेट्स से becomes starts getting powerful, let's say there's a drug, right? I I am not taking that drug, and everyone around me is taking that drug, and they are becoming powerful. And that हाँ, room is a hostile yes. room, so I will take that drug. हम्म, ऑलवेज इन फॉर द ड्रग। हाँ, मतलब मैं नहीं लूंगा तो जो लिए हैं वो मारेंगे मुझे, बिकॉज दैट्स अ hostile room, and world हाँ, is similar, like game theory, prisoner dilemma, all of that. तो लोगों को एक एक हाँ, करके करना ही पड़ेगा। someone will do it fast, someone will do it slow. जो पहले करेगा, दे हैव दिस बर्डन टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट इन ए वे वेयर दे डोंट सफर। क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम करोगे तो मिस्टेक्स हो सकता है, तो यू हैव टू बी स्मार्ट टू डू इट फर्स्ट टाइम। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मेरा स्टेक वाला लाइव स्ट्रीम है। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि इफ यू कनेक्ट मनी विथ साइकोलॉजी, राइट? लेट्स गो। इफ वी कनेक्ट मनी विथ साइकोलॉजी, कि पैसा, लाइक लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि मैंने ये काम किया है, मेरे पास इतना पैसा आया है, अब ये मेरा पैसा है, लोग टाइम देके उस पैसे को अपने पास लाते हैं, राइट? और सॉरी, और उस पैसे से चीज सब खरीदते हैं। तो देयर इज लाइक एक वर्ड है कि मेरा पैसा, वो मेरा जो है काफी साइकोलॉजिकली कनेक्टेड है, राइट? कि ये मेरा पैसा है, इस पे मेरा हक है, राइट? क्योंकि वो पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, वी ऑल नो दैट, कि वो सबने मान के चला ये पैसा है। तो लेकिन हम लोग जब क्रिप्टो की बात करते हैं, एक ओनरशिप की बात करते हैं, राइट? कि लेकिन एंड गोल अगर हम देखें, तो दोनों पैसे से कार ही खरीदा जा रहा है, घर ही खरीदा जा रहा है, ठीक है? तो वेयर डज द सिक्योरिटी स्टैंड्स इन वेब थ्री? अगर मेरा पैसा मेरे वॉलेट से चोरी हो जा रहा है,
तो हु डू आई हम्म, ब्लेम? क्योंकि अगर मास अडॉप्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं तो हमें वो चीज देखना होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है अराउंड आवर सेल्फ, हमारे आसपास जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं, वो थोड़ा ये सोचेंगे कि जो अडॉप्शन अभी जो लोग चुके हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनको तो इतना नहीं फर्क पड़ता है, वो लोग पैसे बना रहे हैं। बट अगर हम लोगों को एक्चुअली बहुत लार्ज स्केल पे जाना है तो हमें और लोग ऑनबोर्ड करने होंगे, 1 बिलियन यूजर्स अडॉप्ट करने होंगे। तो उनके हम्म, सिक्योरिटी को लेके उनको एक एश्योरेंस देना होगा आई गेस, ताकि ज्यादा लोग आए। क्योंकि बस ऐसा बोल देना कि तुम्हारा वॉलेट हैक हो गया, पैसा चला गया, तो थोड़ा वियर्ड लगता है नए लोगों को, राइट? हाँ क्योंकि इतना डेटा है भी नहीं जिससे वो लोग सीख पाए सब कुछ। हाँ, ट्रू ट्रू, लाइक अगेन अभी जैसे स्टार्टिंग में इफ यू सी, wallets used to exist only as a programmable thing, like you had to on terminal create a wallet. उसके बाद वॉलेट का यूआई आया, अब उसके ऊपर रिकवरी फैक्टर्स आएंगे, तो दोज प्रॉब्लम्स विल बी टेकन केयर ऑफ, बट देयर इज अ ट्रेड ऑफ ऑलवेज कि अगर समवन, सो यू विल नीड टू टेक a trade off that do you want to trust yourself or do you want to trust someone else, right? So if you trust yourself, you will keep your wallet and private key with yourself. हैक हुआ तो हो गया. एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट, तो देयर विल बी पार्टीज जो कि आपके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे एट ए फीस, एंड यू विल यूज देम. सो अगेन ये पता चलेगा कैसे? द पीपल विल डिसाइड कि सो as people from industry, what we will do is we will create both solution and we'll see कि किसको क्या पसंद आ रहा है. जो लोगों को पसंद आएगा वो स्केल करेंगे. अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जब बैंक नहीं था तो बैंक से पहले तो लोग सोना अपने पास रखते थे, चोरी हो गया तो हो गया, हम्म, राइट? हाँ सो अब सोना छुपाना बहुत मुश्किल था बट क्रिप्टो छुपाना बहुत आसान है. तो अब बीच में अभी कंफर्ट आया कि हाँ बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं, चोरी नहीं हो सकता है, हो गया तो बैंक फुलफिल कर देगा, बिकॉज मनी तो कुछ था ही नहीं कि चोरी क्या ही होगा. तो हाँ when we actually want money to again exist as a hard good, hard substance, तो उसके pros के साथ उसके हम्म, cons भी आएंगे. बट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, कॉन्स को मिनिमाइज किया जा सकता है. बट इफ यू आर हाँ एक्सेप्टिंग ए हार्ड करेंसी, देन इट विल कम विद सम हार्ड ट्रुथ्स. एंड या some people will make money by um, providing you interfaces which are like Binance. like अभी बहुत सारे लोग वॉलेट के नाम पे बाइनेंस यूज कर रहे हैं. बहुत हाँ, सारे हैक बेचना लोग नहीं होगा. आसान है वहाँ। क्रिप्टो के नाम पे कॉइनडीसीएक्स यूज कर रहे हाँ, उस पे हैक नहीं हैं. होगा क्योंकि हाँ. Coinbase स्टोरिंग योर क्रिप्टो इन देयर वॉलेट. तो हाँ. उनका वॉलेट हैक होगा जैसे वजीरेक्स का हो गया. यस. और वजीरेक्स इज नॉट कंपनसेटिंग बट एज लॉन्ग एज वजीरेक्स तो बहुत ज्यादा पैसा एक वॉलेट में रखी थी. Coinbase इज मच बेटर, दे हैव स्मॉल स्मॉल फंड्स इन स्मॉल स्मॉल वॉलेट्स. तो ओवर टाइम पता चल जाएगा किसको लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, एंड दैट विल बी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. और लाइक किसी भी चीज को अडॉप्ट करने से पहले, लाइक फर्स्ट थॉट दैट कम्स इन ब्रेन की कोई भी नया चीज ट्राई करने से पहले, जैसे कोई कार चलाना सीखता है तो एक डर रहता है कि कार मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट लोग वो आसपास लोगों को देखते हैं कि हाँ ये बंदा भी कार चला रहा है, मेरा दोस्त भी चला रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, तो दे गेट कि और समझते हैं कि इजी भी है, यूजफुल भी है। तो गेट कीपिंग क्रिप्टो में बहुत ज्यादा है, राइट? लोग गेट कीप करना चाहते हैं बहुत सारी चीजों को। तो अगर वी आर नॉट शोइंग पीपल, हम लोग नए लोगों को का डर नहीं हटा रहे हैं, तो हम लोग हम्म, कितना भी एडवांस कर लें, लाइक कितना भी टेक क्रेजी टेक क्यों ना बना दे, लाइक बहुत हम्म, ज्यादा पैसा कोई चीज से मिल रहा है, बट लोगों को जब डर ही, क्योंकि उनके पास क्या, उनके पास अगर 1,000 रुपए है तो बेस्ट केस सिनेरियो है कि उनका 1 करोड़ हो जाएगा, लेकिन वर्स्ट केस तो जीरो हम्म. हो जाएगा। तो एक डर वो बना हाँ. रहता है लोगों में। तो अगर मास अडॉप्शन के लिए जाना है तो वो डर हटाना होगा। तो व्हाट आर द स्टेप्स वी आर टेकिंग टू क्लियर दैट फियर? um, स्टेबल कॉइन्स. तो स्टेबल कॉइन. स्टेबल कॉइन्स इज वन सच स्टेप. कि क्योंकि वॉलेटिलिटी से बहुत डर था लोगों को, तो वॉलेटिलिटी हटा दिए बाय एंड लॉन्चिंग समथिंग कॉल्ड स्टेबल कॉइन, जो कोई एक स्टेबल एसेट का रिस्पेक्ट करेगी. एंड यू ट्रस्ट डॉलर, हाँ ठीक है, दिस इज $1. यू ट्रस्ट यूरो, दिस इज $1. यू ट्रस्ट वट एवर, दिस इज दैट. एक वो हो एंड गया. वॉल्ट का भी आ गया. वॉल्ट्स हाँ, आर अ वॉल्ट गुड आ गया. प्रोडक्ट. तो यस. परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ वॉल्ट्स इज वेरी गुड, तो वो सब
हम्म, इज वन पार्ट ऑफ थिंग्स। सेकंड इज कि अब डर में वो भी सीन है कि देखो लोग तो डरेंगे। इट्स पॉइंट, द मेन पॉइंट इज कि कम किससे डरते हैं, ज्यादा किससे डरते हैं, राइट? हाँ, तो अगर राइट। फियाट में ऐसे कांड हुए जिससे लोग फियाट में ज्यादा डरने लगे, तो यहाँ पर आ हुँ, जाएगा। हाँ, विच इज हैपनिंग राइट नाउ इन टर्की, मेक्सिको, अर्जेंटीना। क्योंकि भाई सुबह उठो, मतलब आई हैव 50 रुपीज, आई बाय वन पैकेट ब्रेड टुडे। आई हैव 50, सॉरी, टर्किश लीरा। आई हैव 50 लीरा, आई बाय वन पैकेट ब्रेड टुडे। आई हैव 50 लीरा, आई बाय हाफ पैकेट ब्रेड टुमारो। आई हैव 50 लीरा, आई कैन बाय वन ब्रेड नाइस। स्लाइस थर्ड डे। तो वो चीजें देख के लोगों को और डर लगेगा। तो फिर हाँ। वो क्रिप्टो का ऑप्सेक सीख लेंगे कि चलो ठीक है, वॉलेट ऐसे ऐसे मेंटेन करते हैं। एंड बिकॉज द बैरियर टू लर्निंग इज नेवर कॉम्प्लेक्सिटी, फंडामेंटली इट इज इंटरेस्ट। हम्म, एंड हुँ, हुँ, वो चीज सॉल्व होगा जब पुराने सिस्टम्स कोलैप्स होंगे, लाइक बिकॉज बिटकॉइन बना 2008 में। इट wasn't मेड बिकॉज द ओल्ड सिस्टम had collapsed, it was made because old system collapse was imminent. हम्म, तो एंड नाउ वी आर वेरी क्लोज, आई थिंक। बट वही है कि ओल्ड सिस्टम जैसे कोलैप्स होना चालू होगा, लोग उससे ज्यादा डरने लगेंगे। तो लाइक फिर यहाँ पे आने लगेंगे। we will lose more money because of kind of the financial system collapsing rather than losing our jobs through AI. हाँ So हाँ, वही बाहर collapse of सब चल रहा financial है। system. हाँ हाँ बाहर देयर इज अ डॉग, आई एम स्केयर्ड ऑफ इट, बट अंदर हाँ। जैसे शेर निकला ना, मैं बाहर मिलूंगा। यस। तो वो वाली चीज है। हाँ। इट्स अ इंटरेस्टिंग जर्नी। बस हम्म, एक चीज है, नथिंग एवर हैपेंस, थिंग्स हैपन वेरी स्लो। तो काफी हम्म, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज एंड एवरीथिंग है, बट हाँ। चीजें ऑलवेज हैपन स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। एंड व्हेन द फ्लड गेट्स ओपन दे हैपन फास्टर देन एक्सपेक्टेड। अपना एक्सपेक्टेशन हमेशा गलत होगा, तो ऑलवेज हम्म, हेज। यस। तो बेस्ट हेज क्या है अभी? बेस्ट हेज, मैं तो अभी आया मतलब 2023 में माय बेस्ट हेज वाज बीटीसी क्रिप्टो गोल्ड। हम्म, Right now, I have no idea what's going to happen in the next 6 months. This is the first time कुछ visibility नहीं है। तो I am, my personal principle wise, I am into Bitcoin more. But other than that, survival के लिए जो चीज चाहिए, land, तो I am right now thinking about Bitcoin land. So, uh, मुकुल mhm, मुकुल अग्रवाल लाइक एक क्रिप्टो वो स्टॉक इन्वेस्टर है, राइट? उन्होंने बोला था कि लाइक 2-3 साल पहले के इंटरव्यू में बोला था कि अपना आँख बंद करके लाइक पिक अप एनी 10 एसेट्स, राइट? आँख बंद करो, रैंडमाइज़ करके 10 चीज़ें उठा लो और एक पोर्टफोलियो तुम अपना सोच समझ के बनाओ। मोस्ट प्रोबेबली दोनों सेम परफॉर्म करेंगे या फिर तुम्हारा जो आंख बंद करके तुम उठाए रहोगे वो ज्यादा परफॉर्म कर लेंगे। और दैट हैज बीन ट्रू विथ मी इन लास्ट 5 years। मेरा पोर्टफोलियो लाइक 7 times अप है और जो हाँ, मैंने आंख बंद करके because उठाया था। last five पूरा years have been मार्केट पैसा golden बनाया years. है। हाँ। हाँ, last five हाँ years have हाँ। been golden years. तो और तो लाइक रिसर्च कितना बैक करेगा इस रैंडमनेस? क्रिप्टो काफी रैंडम है, राइट? तो मेरा रिसर्च मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट्स को कितना बैक करेगा इतने रैंडम वर्ल्ड में? टू पार्ट्स, लाइक देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च। एक होता है मैक्रो वाला, तो सम पीपल प्ले फॉर 5 to 10 year, सम पीपल प्ले फॉर 5 to 10 minutes, मीम कॉइन हंटर्स। तो इफ यू आर डूइंग रिसर्च ऑन फंडामेंटल थिंग्स, तो फिर 5-10 साल का टाइम फ्रेम लेके खेलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स इमेजिन समवन हु हम्म। बॉट क्रिप्टो इन 2012 एंड देन बॉट पिज्जा विद दैट क्रिप्टो इन 2013, 10,000 बिटकॉइन देके। तो उसका खरीदना कोई फायदा हुआ नहीं। तो इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू बाय, इट इज अबाउट व्हाट यू एक्चुअली होल्ड। तो एक्चुअली जो थीसिस है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू होल्ड व्हेन द मार्केट इज डंपिंग, और टू बाय व्हेन द मार्केट इज डंपिंग बाय द डिप। तो बाय द थीसिस, फियर, बाय द हाँ, फियर। यस। तो थीसिस वहां पे काम आएगा। जो टाइमलाइन है, अगेन लाइक, वो ऐसे देखना होगा कि लैंड तो मैं इसलिए, लैंड इज नॉट माई इन्वेस्टमेंट, लैंड इज माई बैकअप। लैंड इज, आई एम नॉट बाइंग लैंड बिकॉज इट विल अप्रिशिएट इन वैल्यू। वो बस है कि अच्छा दूसरे सिनेरियो में खेती कर लिया। व्हाट विल अप्रिशिएट इज बिटकॉइन। और देन ऑलवेज बी श्योर दैट ऑल योर डेली एक्सपेंसेस आर बीइंग मेट।
6 महीना 1 साल का मेरे पास है बैकअप। तो नहीं तो हुँ, हुँ, देखा हुँ। जाएगा, देयर इज ऑलवेज यू कैन स्क्रैम्बल एंड डू थिंग्स बिकॉज वी आर यंग पीपल, वी आर हैविंग लॉट ऑफ एनर्जी, तो क्राइसिस आएगा सॉल्व कर लेंगे। हाँ, लाइक रिस्क जो फाइनेंशियल मार्केट्स में रिस्क है अच्छे एसेट्स के साथ। लाइक लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स में रिस्क है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम स्टॉक्स में एक्टिव था जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी 17-18 साल में। तो लोग बोलते थे कि बहुत रिस्क है, पैसा डूब जाता है। तो मैं सोचता था कि 100 साल से कोई कंपनी चल रही है, वो आज तक नहीं हाँ। डूबी है, अब कैसे डूबेगी? तो मैं हमेशा ये ना रिस्क को पैसे से जोड़ता था। बट धीरे-धीरे आई रियलाइज्ड इन पास्ट 2 इयर्स कि वो रिस्क एक्चुअली पैसे का नहीं है, वो रिस्क टाइम का है। लाइक इमेजिन सिद्धांत है, वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा कर रहा है। तो उसने एसआईपी किया है स्मॉल कैप में, और स्मॉल कैप में पैसा जमा किया और उसका पैसा लाइक 30-40% नीचे आ गया है। अब फंड मैनेजर है, वो बेवकूफ तो नहीं है, वो पैसा जीरो तो नहीं होने देगा, राइट? बट हम्म, जब उसको जरूरत है तब वो पैसा निकालने जाएगा तो उसका पैसा आधा हुआ पड़ा है, तो दैट टाइम इज हाँ द रिस्क। ये मैंने काफी हाँ लेट रियलाइज किया था ये चीज। पैसा तो ऊपर आ ही जाएगा एक टाइम के बाद, लाइक मार्केट लॉन्ग टर्म में ऑलवेज गोज अप। हाँ। तो मतलब जैसे अभी बिटकॉइन खरीदे और 2027 में मेरे को कोई बहुत हेवी एक्सपेंस आने वाला है, देन आई डोंट नो कि मेरा बिटकॉइन उस हाँ, समय नीचे होगा कि ऊपर हाँ, होगा, हाँ, सो हाँ, आई कैन नॉट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। रिलाई ऑन दैट। उसके लिए मेरे को स्टेबल हाँ, कॉइन रखना है, 30% में हाँ, स्टेबल हाँ, हाँ, रखूंगा हाँ। कि वो मेरा ब्रेड एंड बटर है। जैसे इन्वेस्टमेंट हम्म, इकोनॉमिक्स में अपन क्या बोलते हैं, CIS, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग। देयर आर 3 बकेट्स, तीनों का एकदम क्लियर होना चाहिए। आई शुड हैव अ बकेट विच इज फॉर माई कंजम्पशन, I should have a bucket which is for investment, and I should have a bucket which is for saving. यस। राइट। तो हाँ, हाँ, तो मैं Oh, बीच में काफी। कहीं हाँ तो गायब हो गया था, बट लाइव स्ट्रीम नहीं रुका था लकीली। हाँ, लाइव हडल। स्ट्रीम चल रहा था। हाँ, क्योंकि हडल नाइस। हर जगह से स्ट्रीम कर रहा शाउट था, इट शाउट वाजंट आउट माय टू ब्लॉग। हडल। शाउट आउट यस। टू हडल। हाँ, तो वेयर डिड यू गाइस लूज मी? कि कहाँ मैं कहाँ गायब हुआ था? नहीं, ज्यादा कहीं नहीं तो हुआ था, था। आई थिंक गोल्ड और फियाट का ही हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसा, सॉरी, बिटकॉइन और फियाट का, कि डर लगता है लोगों को। ओ, अरे, मैं अपनी साइड पे नहीं, नहीं, फ्लो में पहुंच गया था, माइकल सेलर वगैरह सब सब पहुंच गया था मैं। वो सब ओ नहीं हुआ। डैम, नहीं नहीं, हुआ। ओ, सेलर तो बहुत ओ, पहले से ही मिसिंग है। अच्छा, मतलब वो सब आप लोगों ने सुना ही नहीं पूरा? नप। मैं बोला था कि फियाट जीरो हो जाएगा। अरे, नहीं, 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 वो सब नहीं सुना। वाह। तो मैं क्या बोल रहा था, तो जब शुभम ने कि our parents and almost everyone associate money with gold, right? But अभी गोल्ड बैक नहीं है। ओके, मैं निकलता हूँ उससे। हाँ, हाँ, अगर ओके, ओके, टाइम हाँ मिलेगा तो स्टीम। उसमें आना, स्टेक वाले लाइव स्ट्रीम में। वहां पे माइंस खेलेंगे। ओके, ओके ब्रो। ठीक है, लिंक भेज देना, आई जॉइन यू। हाँ, ठीक है। सोलाना लगा रहा हूँ। बाय द वे, आई एम प्रमोटिंग मास अडॉप्शन। स्टेक पे ऑफ। हम सोलाना लगाते हैं। ओह, स्टेक एज लेट्स इन गो। दैट। ओह नाइस, यस। आई नो स्टेक। हाँ, इट्स कूल। ये क्या चलो। हो गया इंटरनेट को? हाँ, तो आता हूँ अपने पॉइंट पे। ये लास्ट पॉइंट रखते हैं, फिर एंड कर देंगे। ठीक है। तो पॉइंट ये था कि बिफोर dollar was backed by gold, right? And when dollar was backed by gold, each dollar had a weight associated to it. That is the weight of gold, right? But after dollar kind of freed from gold, there was no pegging to dollar, uh, of gold to dollar. After that point, you didn't have any weight associated to money, so you could like print how much ever you can, and exact weight nahi tha money ka. So money lost its physical sense, right? Physically it didn't mean anything. माइकल सेलर ने हर जगह ये बोला है कि if money doesn't mean anything physically, then it actually doesn't make sense to have money हाँ itself, right? But when it comes to Bitcoin or any other cryptocurrency, you can trace, मान लो ये कॉइन है, इसका एक स्पेसिफिक एड्रेस है,
you can trace its entire flow, entire journey completely. But you can't do that in traditional finance or our current financial system because बीच में इतने मीडिएटरीज है और वहां पर कैसे लिक्विडिटी फ्लो हो रही है वो किसी को दिखती नहीं है, right? They can use it in any which way. So you put in 100 rupees and you get out 100 rupees. It's not necessarily the same 100 rupees that you put in. तो तुम्हें फ्लो दिखनेगा अपने 100 रुपीज का. तो Michael Saylor was like, we are bringing back, crypto is bringing back the physical essence to money, but not through weight, through flow. इससे क्या क्या differences आएंगे in economics? क्योंकि economics was majorly based on the physical component of money that was weight. Almost Hmm. everything was kind of if you look at all the concepts, if you look at the entire maths that's written over economics at this point, that's considering कि it has weight. जैसे हम एक block का measure करते हैं, we use the same physics out here, scalars use कर रहे हैं, addition, subtraction, it's majorly that, right? We are Hmm. not really using vectors, we are not really using tensors in economics, right? But with flow, we get vectors and tensors in mathematics. So, do you think economics will be rewritten completely if crypto gets mass adopted? Um, Economics needs to definitely be rewritten. The major reason for that is like economics का ये पूरा this is the curse of economics. So when a measure starts being the goal, it stops being a measure. So Hmm. every time we come up with new measure, and then people make it the goal, and then it stops being a good measure, and then we come up with a new measure. तो इन्फ्लेशन अब काफी स्टैटिक वे में ट्रीट करने लगे हैं लोग अब मतलब Hmm. ओवरऑल भाई नो वन सो थिंग्स डोंट गेट गेट गो साउथ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इट्स अबाउट चेंज ऑफ इन्फ्लेशन तो अगर 4% हमेशा रहेगा इट्स कंप्लीटली ओके बट बिकॉज Hmm. इट्स अनप्रिडिक्टेबल बिकॉज इट्स चेंजिंग फास्ट तो द डेल्टा एक्चुअली मैटर्स इट डजेंट मैटर इफ यू Hmm. आर एट 2% इन्फ्लेशन और 100% इन्फ्लेशन और 1000% इन्फ्लेशन एज लॉन्ग एज इट्स फिक्स्ड Hmm. but when the inflation starts changing, तो फिर things they change. So right now, Okay. why like static economics doesn't make a lot of sense. Hmm. Vector, so scalar economics will not make a lot of sense. उसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे फिर वो वेक्टर में कन्वर्ट होगा उसके बाद लोग उसको स्केलर बना देंगे दे विल ट्रीट इट लाइक ए गोल Okay. सो Okay. Got it. मेजर गोल Hmm. तो समझा. दैट विल हैपन Hmm. but other than that, जो flow वाला part है and so the physical significance of money, gold का physical significance था and the main significance was stock to flow ratio. Hmm. कि जैसे it took so right now it will take 60 years for on the current rate of mining of gold. It will take Hmm. 60 years for gold supply to double. So this is called stock to flow. Gold का around 60 है. Hmm. बिटकॉइन का इससे ज्यादा अब हो चुका है तो Okay. सो योर द वैल्यू कम्स फ्रॉम स्कार्सिटी एंड दैट Hmm. स्कार्सिटी नीड्स टू बी प्रेडिक्टेबल तो हाँ. स्टॉक टू फ्लो से वो पता चलता है हम लोग को अब सो बिटकॉइन का स्टॉक टू फ्लो इज डिफाइंड गोल्ड का सो अब करेंसी गोल्ड का स्टॉक टू फ्लो इज डिफाइंड बट करेंसी जैसे ही गोल्ड को छोड़ा तो उसका स्टॉक टू फ्लो खत्म हो गया तो इट Hmm. स्टॉप बीइंग बैक्ड बाय फिजिकल gold or let's say flow of gold and Hmm. it moved to Yeah. समथिंग एल्स वो जो समथिंग Yeah. एल्स है वो कंप्लीट वायलेंस है लाइक उसी Hmm. के कारण पूरा दुनिया में वॉर हो रहा है बिकॉज Okay. इट इज बेसिकली योर ट्रेजरी बॉन्ड का हेल्थ एंड योर ट्रेजरी बॉन्ड Hmm. का हेल्थ इज एज गुड एज हाउ मच यू आर एग्रेसिव इफ यू अटैक ए कंट्री लूट देयर रिसोर्सेस योर ट्रेजरी बॉन्ड का हेल्थ इज वेरी गुड right? Hmm. But Yes. so nature of currency is driving a lot of violence right now. वो एक Hmm. बार वापस चेंज हो जाए stock to flow of Bitcoin is known. It is better than gold. In fact, gold is the highest stock to flow, but Bitcoin is now better than Hmm. gold. और वो भी 4 साल बाद और डबल हो जाएगा. So because of all of that, Bitcoin is having much more physical significance. And the other factor is because proof of work mining है, so it is just purely crystallized energy. So money is basically crystallized work and time. Work Hmm. time equals to energy.
So Bitcoin is again, gold mining was also work time equals to energy, but treasury bonds is not work time equals to energy, right? Hmm. So, Got it. so we are coming back to work time equals to energy, and that's my currency. Energy. That's the currency. Okay. ठीक है. So, I guess अब end करते हैं. 1 hour 30 minutes. काफी काफी लंबा Yes. खिंच गया। आई होप कोई And क्वेश्चन काफी पेंडिंग नहीं चीजें है। हम काफी चीजें टेक्निकली लाइक काफी टेक्निकल भी हो गए थे बीच में. हाँ, ट्रू तो ट्रू। एंडिंग ऑन अ नोट कि आई विश Satoshi is dead or the wallet is not accessible now. That's the bull या case because now all our assumptions on which we are building the entire economy are right and we will probably not fuck up. So, if yeah, we fuck up, we'll be the guys who clean because there is no yes. alien civilization which will come to help us. We need to help ourselves. अब प्रियांशु का So, क्वेश्चन है, which exchange to हाँ, yes, start that's with a in India? यार, question. coin DCX Binance कुछ भी कर लो, all is good. हाँ, all is हाँ, good. मतलब your Uh, knowledge as good as mine। वजीरक्स था, हाँ, वो चला गया। hmm, So मतलब I would always advocate for self custody, but if that's a yes. problem, any exchange is having risks. Do your own research। हाँ, I guess do your own research. थोड़ा diversify कर लो. Have some in हाँ CoinDCX, have some in Binance, and probably have some in Phantom too. हाँ क्योंकि physical wallet doesn't really make sense when you just start out. हाँ हाँ, मतलब हाँ, फिजिकल वॉलेट आते हैं बीस yes. हजार के हैं। सो इफ यू आर बाइंग टेन हाँ, थाउजेंड रुपीज बाय बाय वॉलेट फॉर 20,000 रुपीज। exactly. So हाँ ठीक है. That's it. Good night and मिलते हैं next week. देखते हैं some other डन डन। topic. न्यू वीक न्यू Done. टॉपिक। Yes. Probably कुछ ऐसा beginner friendly topic की easily सब लोग कुछ कर हाँ हाँ, पाए. मतलब वही, Yes. इफ देयर आर टॉपिक सजेशंस तो लोग Hmm. डाल सकते हैं। वी कैन ऑलवेज पिक दैट अप। Yeah. Okay then. चलो ओके, ending the stream. बाय। Yes. आप stay करो थोड़ा बताता हूँ हाँ आपको ठीक कुछ है। stats. ओके।